The procedure for the amendment of the Indian Constitution is given in which article? Procedure for the amendment, ठीक अछि, संशोधन कहार संविधान संशोधन जो प्रोसीजर रही जो नियम रही ताहा क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि ताहा क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि आर्टिकल 368 मन रखंतु ऑप्शन ए आर्टिकल 368 रे अमेंडमेंट प्रोसीजर को वर्णना करा जायछि भारतीय संविधान रो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. डॉक्टर B.R. Ambedkar को मतरे भारतीय संविधान रो केउ अधिकार जहा हार्ट एंड सोल भाबरे से वर्णना करछ भारतीय संविधान रो केउ अधिकार को से हार्ट एंड सोल भाबरे वर्णना करछ ट्राई करंतु व्हिच ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर B.R. Ambedkar हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे से वर्णना करिसंती नेक्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 1857 मसियार जो विद्रोह होइतला एहा केउ थारु आरंभ होइतला एहा मीरठ थारु आरंभ होइतला करेंटली इन उत्तर प्रदेश स्टेट रो मीरठ थारु 1857 मसियार विद्रोह आरंभ होइतला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम सभापति किए थिले भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम सभापति ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी है राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे यह घोषणा करा दिथला पूर्ण स्वराज एक मुख्य गोल हेबो लाहौर सेशन अछि 1929 रो लाहौर सेशन रे एहाको वर्णना करा दिथला नेक्स्ट क्वेश्चन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ो आंदोलन को लॉन्च करा दिथला एटा काहे माने लॉन्च करा दिथला एवं हमें कहि परिबा क्रिप्स मिशन रो फेलियर जोगु दैट इज लॉन्च करा दिथला सो रिस्पांस टू क्रिप्स मिशन हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन साइमन गो बैक एही स्लोगन किए दिथिले एही नारा किए दिथिले साइमन गो बैक लाल लाजपत राय ऑप्शन ए है राइट आंसर लाल लाजपत राय नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑथराइज्ड टू इश्यू कॉइन्स इन इंडिया देखो प्रश्न को जाउछि एथे कॉइन्स विषय रे जेतेबेला आपनकर कॉइन्स आसीबो दैट इज आरबीआई होबो नै कॉइन्स कथा आसीले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहबा ऑप्शन 2 है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन economies of scale means reduction in unit cost of production option 1 is your right answer unit cost of production mane rakhantu next question a short term government security paper is called what a short term ro government security paper को कोन कहजिबो treasury bill कहजिबो treasury bill option 4 है right answer next question The Spice Garden of India is भारत रो स्पाइस गार्डन भाबरे जाना जाय केरल इज योर राइट आंसर ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन द लैटिट्यूड पासेस थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दे आपनकर केउ लैटिट्यूड पास करिছে 37 डिग्री नॉर्थ ऑप्शन 3 हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कथा को जाउछि तो सेटा होछि आपनकर दिग्बई आसाम रे लोकेटेड दिग्बई इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज वेस्ट कोस्ट रो नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाय ऑप्शन 1 कनकोन कोस्ट कोन है बेटा कनकोन कोस्ट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ कथा को जाउछि विनस ऑप्शन 3 विनस है यार राइट आंसर विनस मान रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 रे प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रथम संविधान संशोधन नियम जरिया रे केउ शेड्यूल को केउ अनुसूची को भारतीय संविधान रे जोड़ा दैतिला ता थिला आपनकर 9th शेड्यूल ऑप्शन बी 9th शेड्यूल हो यार राइट आंसर
Next, which of the following soil types is also known as ussara soils? निम्नलिखित मध्यरु केउ soil type को ussara soil कहि परिबा? That is saline soil. Option A, saline soils is your right answer. Next question, which among the following is a young fold mountain? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक young fold mountain अटे? Young fold mountain होची Himalayas. ठीक अछि, Himalayas mountain. Option A. Next question, Chandra and Bhaga are two headward tributaries of which of the following rivers? One, Chandra एवं भागा दुईटा headward tributaries शाखा नदी अटंती river Chenab. Option D have a right answer. Chenab river is your right answer. Next question, in which year the Gaddar party was formed? कुहंतु गद्दार पार्टी केउ मसिया रे गठन करा दैतिला? गद्दार पार्टी को 1913 मसिया रे गठन करा दैतिला. Option C have a right answer. The Chief Justice of India is appointed by the Chief Justice of India नियुक्ति पांति President of India को द्वारा भारत रो राष्ट्रपति को द्वारा अपॉइंट पांति. Next question number 22. The Garo, Khasi and Jayantia hills are located in which of the following states? Question कहूची the Garo, Khasi and Jayantia hills are located in which of the following state? Garo, Khasi and Jayantia hills are located in Meghalaya. Option 1, Meghalaya is your right answer. Next question, which part of the Indian Constitution deals with official language? Official language विषय रे भारतीय संविधान रो केउ भाग रे वर्णना करा दैछि? Official language विषय रे part 17 of the Indian Constitution. Option 1 is your right answer. Next question, release of water from dams during heavy rainfall will causes extensive कोन हबो? Soil erosion हबो, मृत्तिका क्षय हबो. मृत्तिका क्षय रो एक मुख्य कारण होई परिबो. Option 3 is right answer. Who is the author of the book Ignited Minds? Ignited Minds, Ignited Minds एही पुस्तकटीर लेखक किए अटंती? Ignited Minds एही पुस्तकटीर लेखक हेउचंती APJ Abdul Kalam. Option 1, APJ Abdul Kalam is your right answer. Next question, the Rana Pratap Sagar Dam is built across which river? Rana Pratap Sagar Dam केउ नदी ऊपर निर्माण करा दैछि? River Chambal. ठीक अछि, Chambal नदी हेबो right answer. Next question, government separated East Bengal and merged it with Assam. Option 1, Assam कहि परियो. Next question, which of the following gas is reduced in the reduction process? Oxygen. Option 3, oxygen हेबो यार right answer. Next question, the face of which animal is visible on the front cover of the Indian passport? कुहंतु Indian passport रो front cover रे lion रो face होइछ. Option 3, lion हेबो यार right answer. What type of rock is called a sedimentary rock? Option C have a right answer. Next question, the instrument used for recording earthquake waves is? Earthquake रो wave को record करिया पे के instrument को use करा जाए? Seismograph. Seismograph is your right answer. Next question, how many number of states share their border with Odisha? Odisha रो border को चारोटी राज्य रो border कौन करिछि? share करिछि. Option C. Next, which type of climate does Odisha enjoy? Odisha रो जलवायु होछि tropical climate. Option A have right answer. Tropical climate. Next question, the river Budhabalanga has been originated from? Budhabalanga नदी रो उत्पत्ति होछि Similipal hills. मयूरभंज रो Similipal hills कहि परिबा. Next, clotting of blood vessels is called? Clotting of blood vessels को कोन कहै जाय? Thrombosis. Option A, thrombosis have your right answer. Next question, which type of mosquito when infected with the virus is the main cause of spreading dengue fever? कुहंतु which type of mosquito कथा कहै जाउची जेतेबेले when infected with the virus is the main cause of the spreading dengue fever? That is Aedes. Aedes mosquito. Option B is your right answer. Next question, who was the first Indian to receive the Nobel Prize? प्रथम भारतीय जे कि Nobel पुरस्कार पाइछंती रविंद्रनाथ टैगोर. Option A, Rabindranath Tagore have a right answer. Next question, which instrument is used to measure atmospheric pressure? Which instrument is used to measure atmospheric pressure? That is barometer. Barometer. Option B is your right answer. Next question, which acid is found in vinegar? Vinegar रे आपनकर केउ अम्ल देखिया पई पाइबा? That is acetic acid. Option B is your right answer. Next question, the headquarters of the International Court of Justice is located at?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो हेडक्वार्टर रही हेग रे ठीक अछि ऑप्शन बी द हेग हबो यार राइट आंसर साइमन कमिशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज यार कारण कोन हे परिबो कोंतु साइमन कमिशन वाज बॉयकॉट करा जायतिला भारतीय मानक द्वारा ठीक अछि तो यार कारण मुख्य कारण कोन हे परिबो व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर साइमन कमिशन को बॉयकॉट करा जायतिला कारण एथिरे कोन समस्त मेंबर्स ब्रिटिश थिले ब्रिटिशर्स माने ही समस्त मेंबर थिले केही मध्य इंडियंस मेंबर थिले नाही सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर all its members were british that's why साइमन कमिशन को बॉयकॉट करा जायतिला भारतीय मानक द्वारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which of the following hormones is responsible for the regulating of blood sugar levels in the human body निम्नलिखित मध्यरु केउ हार्मोन्स रेस्पोंसिबल अटे ब्लड सुगर लेवल को ह्यूमन बॉडी रो ब्लड सुगर लेवल को रेगुलेट करिया पे ऑप्शन सी इंसुलिन इंसुलिन इज योर राइट आंसर ओके इंसुलिन हबो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित मध्यरु केउटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गोटे फंक्शन हे परिबो नाही रेगुलेटिंग क्रेडिट सप्लाई हे परिबो मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इट आल्सो हबो फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी मध्ये कहि परिबा किंतु इटसेल्फ इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हे परिबो नाही तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी गोटिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो फंक्शन कहि परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन फिस्कल डिफिसिट इन द यूनियन बजट मींस कोन यूनियन बजट रे फिस्कल डिफिसिट रो अर्थ कोन या माने एहा आपण कोन बुझथि फिस्कल डिफिसिट मींस कोन बुझथि व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर फिस्कल डिफिसिट मींस ऑप्शन बी द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर over total receipts excluding borrowings it means जदि हमें सिंपली बुझिबा कोन है फिस्कल डिफिसिट सरकार ऋण को बाद दबा परे आवश्यकता पई केते खर्च करंती एवं एठारु जणा जाय सरकार आवश्यकता अनुसार खर्च करिबा पई केते ऋण करंती तो एटा होची फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 which one of the following is not an effect of global warming कोंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे ग्लोबल वार्मिंग रो इफेक्ट हे परिबो नाही राइज इन सी लेवल्स एटा हे परिबो एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया एटा भी परिबो ठीक अछि सो दैट वृष्टि देखा देबो नाही इंक्रीज इन बायोडायवर्सिटी तो इंक्रीज इन बायोडायवर्सिटी एंड मोर फ्रीक्वेंटली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो एटा हे परिबो सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके दैट इज नॉट स्पेसिफिकली an effect of global warming so option C हेबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट the phenomenon of reverse osmosis is most commonly used in reverse osmosis process को आपण केउठारे व्यवहार करिवार देखिया पई पाइबे वाटर प्यूरिफिकेशन ठीक अछि वाटर प्यूरिफिकेशन पई रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को यूज करा जाय वाटर प्यूरिफिकेशन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 which of the following river flows through a rift valley निम्नलिखित मध्यरु केउ नदी रिफ्ट वैली जरिया रे प्रवाहित अटे रिफ्ट वैली flows through rift valley river तापी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ठीक अछि तापी रिवर एबो हेरो राइट आंसर रिवर तापी मने रखंतु नेक्स्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज प्राइमरीली यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउसी आई थिंक एटा को प्रयोग करथिले primarily used by British to option B annex territories without direct military conflict it means doctrine of lapse कोन थिला मुख्यतः जदि कथाबा जे राजांकर उत्तराधिकारी रहिबे नाही सेटा ब्रिटिश कंट्रोल को आसी जिवो ए राज्य ओके जदि हमें सिंपली बुझिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 which of the following pairs is correctly matched with regard to ancient Indian dynasty and their capital ठीक अछि चोल मानकर मधुराई चोल मानकर जदि हमें कथाबा जदि हमें एक्चुअल तांकर कैपिटल विषय कथाबा दैट इज तांजोर सो ऑप्शन ए कटिबो पल्लव मानकर तो कांचीपुरम ठीक अछि एटा ठीक लागुची देन सातवाहनस रे मध्य तांकर कोन थिला तांकर थिला प्रतिष्ठान एमि कोन थिला तो अमरावती हे पारे बट हम जदि प्रकृत राजधानी विषय कथाबा ताले ऑप्शन सी आल्सो कटुची ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर ठीक अछि पल्लव मानकर राजधानी होचे कांचीपुरम ठीक अछि आंसर नेक्स्ट ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द क्विट इंडिया मूवमेंट जहा आपनकर 1942 मसिया होइतिला
is considered unique mainly because ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା considered unique mainly because କାରଣ क्विट इंडिया मुवमेंट कौन थिला डू और डाई कर बा मर ଏହା ପରେ ଏଥିରେ ହିଂସା ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା ସो ऑप्शन सी इट lacked non violent discipline and so armed resistance ठीक अछि बहुत भंगा रुजा मध्य होइतिला सो ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज निम्नलिखित मध्यरु केमटा एक केमिकल चेंज हबो मेल्टिंग ऑफ आइस बॉइलिंग ऑफ वाटर dissolving salt in water rusting of iron गोटे chemical change होई जिवो ऑप्शन डी rusting of iron एक कोन chemical change होते next which of the following is not a component of air nitrogen oxygen hydrogen and carbon dioxide hydrogen कोइ परियो hydrogen ओके बहुत मिनिमल तो hydrogen गोटे माने एटा कंसीडर करि परिबा नाही गोटे एयर कंपोनेंट भाबरे next which of the following is a key focus area under the आयुष्मान भारत स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम रो मुख्य उद्देश्य होची गोटे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर vulnerable ग्रुप्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर vulnerable ग्रुप्स इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 which of the following committees recommended the implementation of GST in India goods and service tax को कार्यकारी करिया पई केउ कमिटी रेकमेंड करथिले ऑप्शन ए केलकर कमिटी अछि विजय केलकर कमिटी ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ओडिशा द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया ओडिशा रो केउ मिनरल ठीक अछि गोटे लीडिंग प्रोड्यूसर अटे इंडिया रे क्रोमाइट ऑप्शन सी क्रोमाइट पाखा बाकी 96% ठीक अछि नेक्स्ट द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज राज्यसभा रो टर्म रहउछि 6 इयर्स लोकसभा रो 5 इयर्स ऑप्शन 2 have your right answer next the balwant rao mehta committee was associated with balwant rao mehta committee कहा सहित जड़ित थिले पंचायत राज सहित जड़ित थिले ऑप्शन 3 पंचायत राज have your right answer मन रखंतु next when were the fundamental duties incorporated in the constitution संविधान रे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा दिथिला 1976 रे ऑप्शन 2 have your right answer next the form of oath of office for a minister for the Union of India is enshrined in the ठीक अछि oath of office for a minister एटा को वर्णना करा दिछि 8 शेड्यूल रे तो ऑप्शन 3 हवर राइट आंसर नेक्स्ट the mountain range which divides the north and south India ठीक अछि नॉर्थ एवं साउथ इंडिया को डिवाइड करछि विंध्यास माउंटेन रेंज ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर करबा एटा गोटे कैपिटलिज्म रो पॉलिसी अटे कैपिटलिज्म इकोनॉमी रो एटा पॉलिसी अटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कंजप्शन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड यार कोन इनकम को नै हमें कहै ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर इनकम एंड कंजप्शन नेक्स्ट पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू इनकम रो इनइक्वालिटी जोगु कोन poverty टा शो करि परिबा that is option 2 income inequality is your right answer next which unit of valuation is known as paper gold होची SDR जहा special drawing right SDR हेबो यार right answer next question the ratio of bank's cash holding to its total deposit liability is called the cash reserve ratio CCR को है cash reserve ratio have right answer option 2 समस्त चूज करछन नेक्स्ट क्वेश्चन when Shah visited India during the reign of ठीक अछि कहार शासन काल समय रे when Shah भारत को भ्रमण करथिले हर्षवर्धन ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर हर्षवर्धन have right answer next the विरूपाक्षा टेंपल was built by the विरूपाक्षा टेंपल को केउ माने निर्माण करथिले चालुक्यस ठीक अछि चालुक्यम को द्वारा निर्माण करा दितला विरूपाक्षा मंदिर नेक्स्ट ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन आपनकर जो सांची स्तूप रहिछि ताहा रहिछि मध्य प्रदेश रे ऑप्शन 2 हबो राइट आंसर मध्य प्रदेश नेक्स्ट आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ व्हिच गुप्त एम्परर ठीक अछि केउ गुप्त एम्परर रो कोर्ट दरबार रे आर्यभट्ट एवं कालिदास सेमानकर गोटे मेंबर थिले चंद्रगुप्त 2 ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर चंद्रगुप्त 2 हबो राइट आंसर नेक्स्ट
Ashoka was a king of which dynasty? से क्यों dynasty रो राजा थे? Maurya dynasty. Option 3 is your right answer. Maurya dynasty. Next. The famous Gir forest are located in Gir forest रही आपनकर गुजरात रे. Option 3 have right answer. गुजरात मन रखंतु. The most literate union territory in India is most literate कथा कुआ जाउची लक्षद्वीप. Option 2 लक्षद्वीप have right answer. Where is the headquarter of the Botanical Survey of India located? कहतु Botanical Survey of India headquarter रही कोलकाता. West Bengal रो कोलकाता रे रही Botanical Survey of India headquarter. Where is the Bandipur National Park located? कहतु Bandipur National Park रही कर्नाटक. Option 3 Karnataka is your right answer. Next. Where is the Indian Institute of Petroleum located? Indian Institute of Petroleum located in Uttarakhand ro Dehradun re. Option 3 have right answer. The headquarters of the Odisha Olympic Association is located in Odisha Olympic Association ro headquarter रही Cuttack. Odisha ro Cuttack रे Odisha Olympic Association ro headquarter रही. Next. The Wheeler Island has been renamed as Wheeler Island को नामकरण करा जायछि अब्दुल कलाम आइसलैंड भाବରେ. Option 3 is your right answer. Which of the following is the highest literary award of Odisha? Odisha ro highest literary award होछि अति बड़ी जगन्नाथ दास award. Option B है यार right answer. Next question. In which year Odisha Sahitya Academy was established? Odisha Sahitya Academy को प्रतिष्ठा करा जायतिला 1957 मसिया 1957 हमर right answer. As the last question. The Right to Education Act 2009 was started in which year in Odisha? Right to Education Act 2009 को आरंभ करा जायतिला 2010 मसिया. The following defeated the Marathas in the third battle of Panipat. Which option is your right answer? Third battle of Panipat रे निम्नलिखित मध्यरु किए मराठा माननकु परास्त करथिले? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रे मराठा माननकु किए परास्त करथिले? Which option is your right answer? Option B है यार right answer. Okay. अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली मराठा माननकु थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रे परास्त करथिले. Option B समस्त चूज करछन. Option B है यार right answer. Next. How many digits are there in the India Financial System Code जाकु IFSC कहजे? IFSC रे आपनकर केतोटी डिजिट रहउछ? IFSC रे आपनकर केतोटी डिजिट रहउछ? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड रे 11 टी डिजिट रहउछ. आपण बैंक पासबुक रे देखिया पय पाइबे. ठीक अछि. दैट इज आपनकर 11 डिजिट रहउछ. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 टी डिजिट एथरे रहउछ. नेक्स्ट. The Convention on Migratory Species is also known as Migratory Species मानक पई गोटे जो कन्वेंशन हितला गोटे चुक्ति बा सम्मेलन को एटा को कोन कहजिबो? एटा को कहजिबो बॉन कन्वेंशन. ऑप्शन सी मन रखिबा बॉन कन्वेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The Sardar Sarovar Dam is constructed across which Indian river? ठीक अछि. केउ भारतीय नदी ऊपरे सरदार सरोवर डैम को निर्माण करा जायछि? ट्राई करंतु. सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस व्हिच इंडियन रिवर? रिवर नर्मदा. ऑप्शन सी है राइट आंसर. नर्मदा नदी ऊपरे कोन सरदार सरोवर डैम को निर्माण करा जायछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ईयर डिड the Chauri Chaura incident take place during British rule? British शासन समय रे चौरी चौरा एक इंसिडेंट होइतिला. एहा केउ मसिया रे होइतिला? प्रश्न पचार जाउछि. चौरी चौरा इंसिडेंट केउ मसिया रे होइतिला? 1922 मसिया रे. ऑप्शन बी है राइट आंसर. 1922 मसिया मन रखंतु. नेक्स्ट. When was the first 5-year plan started? प्रथम 5 वार्षिक योजना को केउ मसिया रे आरंभ करा दितला? प्रथम 5 वार्षिक योजना को 1951 1951. ऑप्शन बी वो यार राइट आंसर. आरंभ करा जाइतला. नेक्स्ट. Who among the following wrote the famous book Economic History of India? ट्राई करंतु. Economic History of India एही पुस्तकटीर लेखक किए अटंती? याकू किए लिखिथिले? याकू किए लिखिथिले? ऑप्शन डी आरसी डॉट याकू लिखिथिले. RC dot है यार राइट आंसर. नेक्स्ट. In India, the operation flood is associated with which of the following? Operation flood आपनकर कहा सहित जड़ित अटे? Operation flood
व्हाइट रिवोल्यूशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन सहित जड़ित अटे मिल्क प्रोडक्शन हम यार राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट which constitutional amendment act added the right to form cooperative societies to part 3 of the Indian constitution यह आपनकर केउ संविधान संशोधन नियमर अंतर्गत अटे जहाँ कौन राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आपण समवाय समिति जहाँ कह जाए आपण गठन करें जहाँ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे वर्णना करा जायछि तो यह आपनकर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97तम संविधान संशोधन नियम जरिया ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट which of the following countries has the longest coastline in the world world कथा कह जाउछि वर्ल्ड रो केउ देश पाखरे सबुठारु अधिका कोस्ट लाइन रहिछि मींस उपकूलवर्ती सीमा रहिछि दैट इज ऑप्शन ए कनाडा हेबो यदि हमें भारत परिप्रेक्षी रे कथा बा गुजरात पाखरे रहिछि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बट वर्ल्ड रो कनाडा पाखरे रहिछि मन रखंतु नेक्स्ट ड्यूरिंग द अर्ली 19th century खासी रिवोल्ट इन मेघालय वाज लीड बाय ठीक अछि जहा आपनकर अर्ली 19th century रे खासी विद्रोह होइतिला यह केउठारे होइतिला यह मेघालय ठारे होइतिला यार नेतृत्व किए नेतिले ऑप्शन डी टिरोट सिंह हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम कोंटू फंडामेंटल ड्यूटीज जाको मौलिक कर्तव्य कहा जाय एही कांसेप्ट टी केउ संविधान रु अना जायछि फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रु अना जायछि ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नेक्स्ट who among the following was the founder of the सूर्यवंशी गजपति एम्पायर कहतु सूर्यवंशी गजपति एम्पायर रो फाउंडर प्रतिष्ठाता किए अटंती याकू किए प्रतिष्ठा करथिले कपिलेंद्र देव ऑप्शन बी कपिलेंद्र देव हिजबो यार राइट आंसर नेक्स्ट which of the following articles of the Indian Constitution empowers the president to impose the president rule in the state रे कह जाउछि ठीक अछि स्टेट रे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन जारी करि परिबे यह वर्णना करा जायछि आर्टिकल 356 रे ऑप्शन बी एबो यार राइट आंसर नेक्स्ट when was the second 5-year plan started in India कहतु सेकंड 5-year plan को आरंभ करा जायतिला 1956 रे ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट the subject citizenship is mentioned in which of the following list of the 7th schedule of the Indian Constitution भारतीय संविधान रो 7th schedule रे सिटीजनशिप वर्णना करा जायछि तो एटा केउ लिस्ट रो अंतर्गत आछिबो एटा आछिबो आपनकर यूनियन लिस्ट केंद्र तालिका रो अंतर्गत अटे यूनियन लिस्ट नेक्स्ट the thickness of the ozone layer is measured in terms of which of the following unit ओजोन लेयर रो थिकनेस को मेजर करा जाए दैट इज ऑप्शन होची यार यूनिट एकक कोन ऑप्शन मन रखंतु ऑप्शन ए नेक्स्ट द प्रजामंडल इन नयागढ़ वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन 6th June 1938 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ तो यार नेतृत्व के नैथिले 1938 मसिया होइतिबा नयागढ़ रो प्रजामंडल जो हितला गठन करा जायतिला यार नेतृत्व के नैथिले नारायण नंद ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नारायण नंद मन रखंतु नेक्स्ट which of the following lakes in India is formed due to tectonic activity जोगु केउ हृदयटी आपनकर गठन होइछि दैट इज पुल्लुर लेक ऑप्शन बी पुल्लुर लेक हम राइट आंसर नेक्स्ट रिवर एटा आपनकर कोन पियान गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ which of the following river पियान गंगा केउ नदी रो एक ट्रिब्यूटरी अटे केउ नदी रो एक ट्रिब्यूटरी हिजबो दैट इज रिवर गोदावरी ऑप्शन डी है राइट आंसर समस्त यूज करछन्ती नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर ठीक अछि फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करूछि दैट इज आर्टिकल 23 ऑप्शन बी है राइट आंसर आर्टिकल 23 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पांसिबल फॉर इटाई डिजीज पाई निम्नलिखित मध्यरु केउ एलिमेंट्स केउ मौलिक रिस्पांसिबल अटे दैट इज कैडमियम ऑप्शन ए कैडमियम हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट who among the following freedom fighters was regarded as the देशबंधु नाम रे किए जणा जानती देशबंधु नाम रे जणा जानती चित्तरंजन दास देशबंधु चित्तरंजन दास नेक्स्ट which of the following lakes is the largest
freshwater lake in India. Largest freshwater lake in India, that is option B, Ullur Lake. Option B, Ullur Lake is your right answer. Where is the headquarters of the State Bank of India located? Kuhantu SBI. State Bank of India ର headquarter ରହିଛି Mumbai ରେ. Option D, Mumbai is your right answer. When was the first Anglo-Sikh war fought? ପ୍ରଥମ Anglo-Sikh war ଲଢା ଯାଇଥିଲା 1845 to 1846 ମଧ୍ୟରେ. Option B have a right answer. Next. Which of the following soils looks yellow when it occurs in hydrate form? निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ତାହା yellow look ର ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା hydrate form ହବ? That soil ହେଉଛି red soil. ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, red soil ହବ right answer. Next. Which among the following countries does not share its border with Red Sea? କୁହନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ତାର ସୀମାକୁ Red Sea ସହିତ ବଣ୍ଟନ କରୁନାହିଁ? That is Ethiopia. Ethiopia, option D have a right answer. Next question. Which among the following institution release the All India Consumer Price Index numbers for industrial workers? निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରିଲିଜ କରେ All India Consumer Price Index numbers for industrial workers ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି Labor Bureau. Option D, Labor Bureau ହେବ ଏହାର right answer. Next. Which of the following parts of the Indian Constitution was described as the noble future of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? ठीक अछि निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ को novel features भाବରେ B.R. Ambedkar ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ତାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର part 4 of the Indian Constitution. It means DPSP ଅଟେ. Next. The right to property was removed from the part 3 of the Indian Constitution. So which constitutional amendment act? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ. Right to property को remove करा ଯାଇଛି fundamental rights part 3 of the Indian Constitution ରୁ. ତାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 84 ତମ संविधान संशोधन नियम 1978. Option C have here right answer. Okay. Next. When was the All India Khilafat Conference held in 1919 रे? All India Khilafat Conference होइतिला आपनकर दिल्ली थारे. Delhi is here right answer. Option B. Next. Who is called as Frontier Gandhi? Frontier Gandhi भाବରେ किए जाना जानती? Frontier Gandhi भाବରେ जाना जानती खान अब्दुल गफर खान. Option A have here right answer. Khan Abdul Ghaffar Khan. Next question. When was Niti Aayog formed in India? क्यों मसीहारे नीति आयोग को गठन करा जाइतिला? 2015 मसीहारे नीति आयोग को गठन करा जाइतिला. Next question. Which among the following countries is the largest producer of copper in the world? World रे अधिक परिमाण रे copper को produce करूची. Okay, that is Chile. Chile country is your right answer. Option A. Next. The concept of justice in the preamble of the Indian Constitution was taken from? Justice को adopt करा जाइछि that is Russian Revolution. Option A, Russian Revolution have a right answer. Next. The Indian National Congress and the All India Muslim League signed the which part? That is Lucknow Pact. Lucknow Pact in 1916. Option D. Next. Atacama Desert is located in which of the following countries? Atacama Desert रहिछि आपनकर South America. Option D, South America have a right answer. Where is the headquarters of National Biodiversity Authority located in India? केउठारे National Biodiversity Authority रो headquarter मुख्यालय रहिछि that is रहिछि आपनकर चेन्नई रे, तमिलनाडु रो चेन्नई रे रहिछि. आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. On which of the following rivers is the Mettur Dam situated? Mettur Dam टा आपनकर रहिछि river Kaveri रे. Option B have a right answer. Which among the following is not a part of the Article 19 of the Constitution of India? Which option is your right answer? निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା Article 19 Constitution of India ର part नुह? Option A ରେ कोन कहिछि freedom of speech and expression एटा हे परिबो. Okay. Then option B रे रहछि freedom to assemble peacefully and without arms एटा भी हे परिबो. ठीक अछि आपण एकाठी हे परिबे बिना अस्त्र शस्त्र रे. ऑप्शन सी रे कहूची फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन एटा भी परिबो. ठीक अछि. सो ऑप्शन ए बी सी आर्टिकल 19 रो अंतर्भुक्त रे आसी जाउची, बट ऑप्शन डी हबो नाही. ऑप्शन डी व्हिच द राइट आंसर. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटा आपनकर आर्टिकल 16 अंडर रे आसे. ओके, आर्टिकल 16 कहूची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो ऑप्शन डी हबो हेर राइट आंसर. ऑप्शन डी समस्त चूज करछथि. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर
2 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 2 no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Which article of the Indian Constitution contains this sentence? It means no person shall be prosecuted किंबा punished हेई परिबो नाही. ओके गोटिए दोष पई से दुई थर दंडित हेई परिबो नाही. एहा बा एही सेंटेंस टी आपनकर केउ आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि. एही सेंटेंस टी आपनकर आर्टिकल 20 रे वर्णना करा जायछि जाहाकू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी मध्ये कुआ जाय. सो आर्टिकल 20 हेबो हेरो राइट आंसर. ओके आर्टिकल 20 हिज हेरो राइट आंसर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी विषय रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिवा. Which among the following is not a directive principles of state policy listed in the Indian Constitution? भारतीय संविधान रो डीपीएसपी हम जानि छथि. डीपीएसपी कोन पार्ट 4 रे वर्णना करा जायछि. डीपीएसपी को प्रश्न पचरा जाउछि निम्नोक्त मध्यरु केउटा डीपीएसपी रो अंतर्भुक्त रे आसीबो नाही. ऑप्शन ए रे कोन कहउछि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा आसी परिबो. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतस एटा आल्सो आसीबो. ठीक अछि. देन एटा आपनकर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एटा भी आसीबो. देन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली अमंग द यूथ आसीबो ना. एटा डीपीएसपी रो अंतर्भुक्त रे आसीबो नाही. सो ऑप्शन डी हबो हेरो राइट आंसर. ठीक अछि. ऑप्शन डी जहा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एडॉप्टेड फ्रॉम आइलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बना जायछि. बट ऑप्शन डी प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली अमंग द यूथ आपनकर डीपीएसपी रो अंतर्भुक्त रे आसीबो नाही. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो अंतर्भुक्त रे आसीबो नाही. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करंतु. अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट प्राइस कंट्रोल लिस्टेड कोन. प्राइस कंट्रोल टा आपनकर केउ तालिका रो अंतर्भुक्त हबो. प्राइस कंट्रोल कोन प्राइस कंट्रोल टा आपनकर यूनियन प्लस स्टेट मींस दैट इज कनकरेंट लिस्ट जाको जुग्म तालिका कहै जाय. आपनकर कनकरेंट लिस्ट रो तालिका रो अंतर्भुक्त हेबो प्राइस कंट्रोल. मींस जते बेले दर दाम को नै कथा आसीबो सेते बेले केंद्र एवं राज्य सरकार उभय मिसी निष्पत्ति नै परिबे. बुझि हला. ऑप्शन सी समस्त चूज करछथि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिवा. अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सब्जेक्ट पुलिस लिस्टेड कोन. पुलिस मैटर ता आपनकर राज्य तालिका स्टेट लिस्ट अंडर रे आसी जिवो. ऑप्शन बी हेबो हेरो राइट आंसर. ऑप्शन बी समस्त चूज करछथि. पुलिस दैट इज कोन आपनकर स्टेट अंडर रे आसी जाय. ठीक अछि. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इंडिया इज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज भारत रो इकोनॉमी ता होछि मिक्स्ड इकोनॉमी. काहे कि कारण एथरे कोन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रहछि. सो व्हिच ऑप्शन इज ऑप्शन डी. देयर इज ए कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर along with private sectors. That's why option D हेबो यार राइट आंसर. ऑप्शन डी समस्त चूज करछन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोन. निम्नोक्त मध्यरु केनटा एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अटे. एयरपोर्ट हे परिबो कि एयरपोर्ट होचे एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एटा हबनी. ब्रिज आल्सो गोटे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. स्कूल हे परिबो. स्कूल हेउचे एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अटे. हाईवे टा आल्सो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अटे. मन रखंतु आउ कोन कोन हे परिबो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रे मींस आपन स्कूल आसी होची जेमिति एजुकेशन हेल्थ केयर सैनिटाइजेशन और हाउसिंग कथा हमें कहि परिबा. दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिबा. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज ऑप्शन अनुसार ट्राई करिबा. ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक हेउचे महेंद्रगिरी. महेंद्रगिरी हेबो यार राइट आंसर. ऑप्शन सी महेंद्रगिरी. ओके. देन हमें जदी कथा बा वेस्टर्न घाट विषय दैट इज अनाईमुडी आसी जिवो वेस्टर्न घाट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्युमिनस क्रॉप. निम्नोक्त मध्यरु केनटा एक लेग्युमिनस क्रॉप अटे कोंतु. लेग्युमिनस क्रॉप व्हिच ऑप्शन हे जिवो पल्सेस हे जिवो डाली जातीय. ठीक अछि. डाली जातीय क्रॉप होची गोटिए कोन लेग्युमिनस क्रॉप अटे. पल्सेस इज योर राइट आंसर. ऑप्शन ए. एथे कोन नाइट्रोजन उत्पादक रहिबो एथिरे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट widespread and the most productive category of soil in India. ओके. निम्नोक्त मध्यरु केउ मूर्तिकाटा भारत रे कोन दैट इज मोस्ट प्रोडक्टिविटी एंड तापर व्यापक अटे दैट इज alluvial soil. ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर. alluvial soil is your right answer. मन रखंतु alluvial soil. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which is the largest
coal based power plant in Odisha. Odisha रो largest coal based power plant हेउची तालचेर super thermal power station. तालचेर power plant हेबो हेरो right answer. Option A is your right answer. Next question. Which wind brings major rainfall in Odisha? Odisha रे केउ wind वृष्टिपात कराए, that is साउथ वेस्ट. ठीक अछि, साउथ वेस्ट monsoon wind is your right answer. साउथ वेस्ट monsoon wind, option B have right answer. Next question. Which is the second largest river in Odisha? Odisha रो second largest river हेउची river कोन ब्राह्मणी ना बैतरणी? Which option? River ब्राह्मणी होइबो, option B. ब्राह्मणी नदी होची second largest river in Odisha. Next question number 14 try करिवा. Which of the following soils covers the largest area of Odisha? Odisha रो मृत्तिका हेउची red soil. Option A red soil हेबो हेरो right answer. माने रखंतु. Next question number 15. The word Satyameva Jayate in the state emblem of India has been adopted from. Satyameva Jayate एटाकू आपनकर बाहर करा दैछि, that is केउ उपनिषद? मुंडक उपनिषद. Option B हेबो right answer. मुंडक उपनिषद हेबो हेरो right answer. Option B मन रखियो. Next. Who was the founder of the Gajapati dynasty in Odisha? Gajapati dynasty रो founder हेउचंती के? Gajapati dynasty रो founder Kapilendra Deva. Option B Kapilendra Deva हेबो हेरो right answer. Next. Who built Jagannath temple at Puri? Puri रो जगन्नाथ मंदिर को किए निर्माण करथिले? Who built Jagannath temple at Puri? Question number 17. Chodoganga Deva. Option B हेबो हेरो right answer. Chodoganga Deva हेबो हेरो right answer. Next question. Who was the first to build the Baravati fort at Katak? कटक ठारे थिबा बारबाटी दुर्ग को किए प्रथमे निर्माण करथिले? अनंग भीम देव 3. अनंग भीम देव 3 हेबो यारो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट ओडिशा इन 1921 रे? के गांधी जी को निमंत्रण करथिले ओडिशा को भ्रमण करिया पई? उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास. व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन ए गोपबंधु दास इज यारो राइट आंसर. Next question number 20. Which of the following was the first Odia daily newspaper? प्रथम ओडिया daily newspaper थिला उत्कल दीपिका. Option C is your right answer. उत्कल दीपिका have a right answer. Next question. Which inscription depicts the horrors of Kalinga war? जो कलिंग युद्ध विषय रे सेटा आपन केउ इंस्क्रिप्शन रे वर्णना करा दैछि? Rock Edict 8. Rock Edict 8 is your right answer. Option C. Next question. Question number 22. In which year was the High Court established at Katak? Katak ठारे केउ मसिया रे High Court को प्रतिष्ठा करा दैथिला? High Court को प्रतिष्ठा करा दैथिला 1948 मसिया ठारे. Option C हेबो यार राइट आंसर. Next. When was the official language act passed in legislature of the state of Odisha to introduce Odia in official language? Okay, official language act को पास करा दैथिला ओडिसा रो स्टेट लेजिस्लेचर रे. ओके, ओडिया को गोटे ऑफिशियल वर्क भाबरे एटा आपनर केउ मसिया रे? ऑप्शन डी 1954 मसिया रे. 1954 मसिया हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ईयर एटा विन करंतु? इन व्हिच ईयर डिड घुमुसर रिबेलियन टेक्स प्लेस? घुमुसर विद्रोहटा आपनकर केउ मसिया रे होइतला? 1835 रे. 1835 रे घुमुसर विद्रोह होइतला. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year did Paiko rebellion takes place in Khorda? Khorda ठारे पाइको विद्रोह होइतला 1817 मसिया. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. 1817 रे खोर्धा ठारे पाइको विद्रोह होइतला. नेक्स्ट क्वेश्चन. When is World Environment Day observed? कोन World Environment Day को केउ दिन पालन करा जाय? World Environment Day को 5 जून मास 5 तारिख को सेलिब्रेट करा जाय World Environment Day. नेक्स्ट. When is World Ozone Day observed? World Ozone Day भाबरे सेलिब्रेट करा जाउची 16 सितंबर को. सितंबर 16 को World Ozone Day भाबरे सेलिब्रेट करा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The uplifted parts of the Block Mountain is called? Block Mountain रो जो uplifted parts रहिछि सेटा कोन कहै जिवो? That is called horsts. Option D is the right answer. Horsts कहै जाय. Next. When was the new economic policy introduced in India? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा दैथिला भारत रे 1991 मसिया रे. 1991 इज यार राइट आंसर. नेक्स्ट. Where does the river Yamuna
join with the river Ganga. ଯମୁନା ନଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସଂଗମ ଯୋଉ ମିଳନ ସ୍ଥଳଟା କେଉଁଠାରେ? that is Prayagraj. Option C Prayagraj ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି Prayagraj। next question number 31, when is the world water day celebrated annually? world water day को celebrate କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ को। very very important, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ को world water day ଭାବରେ celebrate କରାଯାଏ। question number 32, in which year did Lord Canning announce Queen's Victoria's proclamation? ठीक अछि, लॉर्ड कैनिन घोषणा पत्र गोटे अनाउंस करथिले, दैट इज क्वीन विक्टोरियास को केउ मसिया रे? क्वेश्चन नंबर 32 1858 मसिया रे। ऑप्शन डी हैव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इज वो सोलर सिस्टम रो जुपिटर। ऑप्शन डी जुपिटर हैव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the river discharge their waters from all the direction in a lake or गोटे डिप्रेशन हो परिबो, the pattern is known as all the direction कथा कहै जाउची। तो ए पैटर्न टू कहै जिवो सेंट्रीपिटल पैटर्न कहै जिवो। ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल पैटर्न है राइट आंसर। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कोंतु माउंट किलिमंजारो आपनकर लोकेटेड इन तांजानिया। ऑप्शन डी तांजानिया रे दैट इज लोकेटेड अटे। नेक्स्ट, the first meeting of the National Integration Council was held in the year? National Integration Council रो प्रथम मीटिंग केउ मसिया रे होइतिला? यार प्रथम मीटिंग टी होइतिला 1962 मसिया रे। ऑप्शन बी हैव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the last ruler of the समवंशी डायनेस्टी? समवंशी डायनेस्टी रो शेष शासक के थिले? शेष शासक थिले कर्णदेव। ठीक अछि, कर्णदेव एबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, when was the banks board bureau established? कोंतु banks board bureau को केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा दैतिला? banks board bureau को एस्टैब्लिश करा दैतिला 2016 मसिया रे। ऑप्शन बी हैव राइट आंसर। नेक्स्ट, where is the headquarters of the rubber board of India located? rubber board of India रो हेडक्वार्टर मुख्यालय रहछि ऑप्शन डी कोटायम। ठीक अछि, कोटायम रे रहछि, मन रखिबा। आज रो लास्ट क्वेश्चन, ओजोन इज ए रिलेटिवली अनस्टेबल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ dash atoms of oxygen, 3 atoms of oxygen. Option B have राइट आंसर। तो